के साथ आज दोबारा हाजिर हूं आपके साथ लाइव प्रीव्यू बिकॉज लाइक आई सेड यस्टरडे ड्यूरिंग यस्टरडेज लाइव जब हमने मैच के बारे में बात करी पिछले दो मैचेस के बारे में बात करी चेन्नई के कंडीशन चेन्नई के प्रोबेबल प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होंगे ये सब तो हमने कल बात करी बट आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग को क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट India's chances today because yesterday was more about me talking and taking your question. आज मैं आप लोग से सुनना चाहता हूं जो भी इस लाइव स्ट्रीम पर मेरे साथ जुड़े हैं एक तो गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका आशा करते हैं आप सब ठीक हैं और आप भी मेरी तरह मैच का इंतजार कर रहे हैं बिकॉज दोस्तों मैंने कल भी इस चीज को लेकर कहा था और मैंने मैच के दिन भी मैच के बाद जब मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे आया था तो मैंने कहा था कि दिस इज इंडियाज रिकॉर्ड लॉस मतलब to lose by 10 wickets with 234 balls left in the match is in fact India's worst defeat when they're batting first. तो इस हार के बाद मैं सोच रहा था पिछले 2 दिन से कि कितना मतलब how often does the Indian team get bowled out for 117 or a total that low or how often does the सामने वाला टीम इस इतना कम टारगेट को 11 ओवर के अंदर चेस करती है तो जहां हम बात करें रिकॉर्ड डिफीट की यानी कि 234 बॉल्स छोटा मोटा हार नहीं था दोस्तों ये एक रिकॉर्ड हार था तो क्या यहां मैं आपसे भी आपकी राय लेना चाहूंगा क्या ये इंडिया का इतिहास में वनडे इतिहास में सबसे शर्मनाक सबसे heavy defeat है is it the most embarrassing loss because this is India we're talking about ranked number 1 okay घर पे रिकॉर्ड इज आउटस्टैंडिंग ये हारते नहीं है घर पे 2019 में सिर्फ ये एक सीरीज हारी थी ऑस्ट्रेलिया से इतने बड़े सुपरस्टार आप घर पे खेल रहे हो आपके पास इतने फॉर्म टीम है वर्ल्ड कप ये रहो और फिर आप 10 विकेट से हारते हो इतना कम टोटल बनाकर मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स बहुत बहुत और भी एम्बेरसिंग लॉसेस हुए आई थिंक जिससे इससे पहले मैंने अगर एक बहुत बड़ा हार देखा था दैट केम इन दैट 2000 या 2001 एक कोका कोला ट्राई सीरीज होती थी यूएई में और उसमें सनत जयसूर्या ने कुछ खुद 188 189 ऐसे कुछ बनाए थे और इंडिया को 100 के अंदर मेरे ख्याल से 52 के आसपास इंडिया को निपटा दिया दैट लॉस टू मी स्टैंड्स एज द मोस्ट एम्बेरसिंग बट डज दिस मैच losing to Australia in this manner does that put this right up there because to lose by 10 wickets दोस्तों मतलब bowlers ने चांस ही नहीं दिया और जिस तरह से मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने धोया हमारे बॉलर्स को उस एम्बैरेसिंग बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद it does raise the question was the Vizag loss India's most embarrassing loss in ODI history आप लोग बताइए देखते हैं कोई कमेंट्स आए हैं रचित तिवारी कह रहे हैं 10 wicket losses are becoming a norm for India concerning yes I mean you talk about 10 wicket defeats and last year World Cup T20 World Cup the way that eventual winners England smashed India by 10 wickets Alex Hales Joss Butler so yes they are becoming a bit of a pattern but look I'm not saying that one loss will make this team into a stumbling bumbling team नहीं अभी बहुत काबिलियत है इसमें but you need to figure out a way to handle Mitchell Stark. दो मैचेस में 8 विकेट लिए बंदे ने जिसमें से most of them have come in the power play. He's averaging just 12 for his wickets and I mean I know the Chennai track is traditionally slower ये high scoring venue नहीं है लेकिन इंडिया की बैटिंग प्रॉब्लम्स देख के लगातार इन दो वनडेज में और स्टार्क की बॉलिंग फॉर्म देखकर कैन वी नॉट एक्सपेक्ट अनदर सच कमांडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मिचेल स्टार्क आई एम फुली एक्सपेक्टिंग such a performance though I do think India will not play as poorly as they did in the last two matches, especially the last match. But Philby, you cannot discount Mitchell Stark. Good morning, Bharat Kotwani. How are you? How are you? I'm very fine. बताइए, how are you doing? वैसे आप लोग कहाँ से जुड़े हो? कोई दफ्तर में है, कोई घर पे है, कोई मेट्रो में है. Where are you people? Where do you find time to take out, a few minutes to come and say hi to me and to chat with me? Always nice कि आप लोग दोबारा लौटते हो मेरे साथ बात करने के लिए. But where are you from? Also remember, like button ठोको दोस्तों, like button. मैं केवल आप लोग का जवाब लूंगा अगर आप लाइक बटन दबाएंगे क्योंकि जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतना ही इस वीडियो की रीच होगी शाहनवाज हैदर आप बहुत बहुत आते हो शो पे अच्छा लगा as I commented in your previous video of 10,000 runs and tests for the probability of taking 500 yes बिल्कुल मैं आपकी बात से समझ गया because look Ashwin and Nathan Lyon have already crossed 450 right so जाहिर सी बात है कि वो 500 तक पहुंचेंगे but you tell me शाहनवाज हैदर आज is there any bowler fast bowler spinner you see जो अभी मतलब पिछले 2 साल में उन्होंने अपनी टेस्ट करियर शुरू करी is there any such bowler I'm not talking about someone like Rabada
Rabada's been playing, for 6, 7, 8, 9 years. I'm talking about, is there any bowler who's playing his second year of Test cricket, and does that person look like taking 500s? I think the answer is no. Because अभी Test cricket की वो भूख नहीं, वो चाह नहीं है players में, because of the distractions of T20 leagues, right? Any bowler who's nearing 500s, Nathan Lyon ho, Ashwin ho, they started their respective domestic careers when Test cricket and one day cricket were still the most popular form. Any bowler who's now taking his first steps as a professional cricketer, or who's breaking into a state size domestic teams or leagues, they have played the majority of their cricket since T20 cricket has been around, especially since the IPL. तो अगर कोई खिलाड़ी आज 18 और 22, 23 के बीच में है और वो अच्छा प्रदर्शन दे रहा है और वो लगता है कि हाँ ये बहुत टेस्ट मैच खेलेंगे, मेरा ये मानना है कि 10,000 रन और 500 विकेट टेस्ट में नामुमकिन है, बिकॉज द फोकस ऑफ प्लेयर्स इज नॉट ऑन टेस्ट क्रिकेट एज मच as it was 10 years ago. This is why Shana was Hyder. Why I don't think you cannot count Rabada, because Rabada has already been playing. I'm talking about players who have played just 1, 2 years, maximum 3 years, and who look like damn good prospects. But the 500 mark is too far ahead, because Test cricket is not played as much as it was before for most countries. ऊपर से T20s and T20 leagues, there's too much pressure on players to go earn a living. That's why I think there is no chance. Bharat Kotwani, good sir. 320 versus 320 game will be an interesting game. Absolutely, absolutely, Bharat Kotwani, because Chennai historically is not even a 320 type ground. It's more of a 270 to 300 type ground. So I expect if they get to 320, it'll be outstanding. But just seeing how poor India's starts have been in this series, Bharat, I don't think India is even going to get anywhere near 300, because the morale is low. Scoring off Stark is next to impossible. For India, a good total today in the current form their batsmen are would be 260. I don't see this team getting anywhere near 300 because of the Mitchell Stark factor. I don't think he's going to go for 80 runs suddenly. He's going to get at least 2 wickets up front again, and India will have to play outstanding cricket to get to 260. But so, yes, I would have said Bolan the way he started, but he is 30 plus. Rachit, absolutely. I'm talking about, if look at the canvas that I'm setting for you when I talk about players who could or could not get to 10,000 runs or 500 test wickets. You have to be at the start of your test career and look like a very, very promising player, right? The hopes of your respective nations have to be pinned on you, like a Shubman Gill, like a Rishabh Pant who before he got injured, like an Ollie Pope, though he's 25, like a Harry Brook. Harry Brook was what, 24, he's had a fantastic start. So I'm talking about players जो अपने early 20s में हैं, जो अभी अपने टेस्ट टीम में वो लॉक है, like वो अगले 10 साल तक ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन 10 साल खेलने के बाद will Harry Brook get to 10,000 runs? Because he's in England's one day team, he's in England's T20 team, he's playing various leagues. I just think the road to 10,000 runs, the road to 500 wickets, the road to 100 test matches is much, much shorter for any player in their early 20s playing right now because of the said distractions. Killer Knight, hi, hi, hi. How are you? How are you? Yeah, Killer Knight. Your name was Ajay Singh. Was it Ajay Singh? Was your name? Please remind me, Killer Knight, of what your name was. If Australia bat first and get 350, India batting will be. If Australia bat and get 250, India's batting will be under pressure. India's batting is very, very frail now, not skill wise, not talent wise, but because of this sudden change from formats in the span of like 6 weeks, you're playing T20s, tests, one days. Also, the hold that Mitchell Stark psychologically has had over India's batsmen. India's batsmen are totally on the back foot. Sky does not know कि बल्ला कहाँ से आएगा. Shubman Gill is gone from the hero to all of a sudden getting out cheaply. So it's not about a talent. It's about what mindset are India's batsmen in right now when they come up. On the sight of Stark, Stark ने बस ball लिया, Stark ने अपने run up लिया. Already इन लोग का मौसम खराब होने वाला है. So 250 is going to be a challenging target for both teams. Shanawaz, because I can't see the match, but I can see some time to watch your video. I get a feel of entire match. That's why. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शाहनवाज. आप बहुत regular viewer हो, आप अच्छे comments करते हो. Thank you for sticking around. Karan Naidu, will Surya score some runs today? I think the question, Surya, is not, Karan is not, will, can he? Look, coming off two golden ducks when you were a superstar, when you are, Mafi Changa, when you are a superstar, it's very, very tough. I hope the team plays him. They should play him just to back him.
But does he bat at number four? You tell me, Karan Naidu. Does he bat at four in this current frame with Stark swinging the ball? ये तो लाजमी है कि his guy is going to walk in the power play. I still see two wickets falling, and I still see Surya or whoever comes at number four having to bat inside the power play. Now, my question to you, Karan Naidu, and all the lovely viewers here: do you think, in the current state of mind that he's in, when he doesn't know where to put his front foot, where to bring the back down, should Sky be batting at four? Or should he perhaps come down at number five, six? Should KL Rahul go up? Should Jadeja go up? These are the questions I have for you. Atul Pratap Singh, sorry, not Ajay Pratap Singh, Atul Pratap Singh. सर मुझे लगता है कि इंडिया कंपल्सरी मैच विन करेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम, हम भी ये चाहते हैं, लेट्स होप कि ऐसा हो जाए. अतुल प्रताप. Sir, reduce slow mo time to 1 minute. Well, Bharat Kotwani, I've had to keep it because you guys asked so many questions and such lovely questions that I, as a host, as an anchor, I don't want to miss your question. That's why I kept the time limit, because sometimes when there's a lot of people, बहुत मुश्किल हो जाता है for me to answer your question, and I think that'll be unfair on you. So it's done with all good intentions. So please, thoda bear with me. Balaji Patel, no one can replace Sky. Well, no one can replace Sky in T20s, but I think Sky is very replaceable in the one day format, Balaji. I'll tell you why. Because every single match that Suryakumar Yadav has played in India's one day 11 has come when a first choice player has been either absent through injury or rested. So Suryakumar Yadav has never been a first choice player for India. He's always given a chance when someone is injured. So he's already struggling because he doesn't have the entire faith. By faith, I mean he knows, I'm only playing when someone's not around. Okay. And he set the bar so bloody high in T20s. He's the best T20 batsman going around. 15, 18 months of sustained, unparalleled success by an Indian batsman in T20s. But after 19-20 matches, you still can't crack the T20I code. You only get a chance because Shreyas Iyer's injured, and then you get two golden ducks. So I very much will have to disagree with you here and say that Suryakumar Yadav is definitely replaceable in the one-day format. What's been the pitch report? Well, there's a bit of rain last 48 hours. But look, Chennai wickets, Karan, you talk about Chennai wickets, the Chipok wicket. It's not a high scoring venue. In the last 10 years, no team has got to 300. I think 298 or something was the highest score there. So it's a 275, 280 kind of track in these conditions. And spin will always have a bigger say there than pace, which is why, like I discussed in yesterday's live stream, India are going to stick with three spinners. The question is, who will the third spinner be? Will they persist with Kuldeep Yadav? Or would they perhaps? I think it's going to be slightly risky because Rahul Dravid does not like taking risks. लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में Washington Sundar should play at the expense of Kuldeep Yadav. Now, before you all say, "Banda kya bol raha hai? What the heck are you saying, Jamie?" My point is, Kuldeep Yadav. This is not a slight against him. It'll be very unfair if he goes out. But as good as he is with his varieties and the bounce, right now India's batting is weak. So, at the risk of taking away one quality specialist spinner, you need to bolster that with someone like Washington Sundar, because for two reasons. One, the guy can bat, and India are in desperate need of batting down the order. The top order is failing miserably against Stark. India's runs are coming from the lower order, so you need Washington Sundar in the middle order, and you also need his very canny, handy off spin in the power play. So, three spinners, it's very harsh on Kuldeep. I would drop Kuldeep and play Washington Sundar. Killer Knight, sir, please wish a prediction that Kohli hit another. यार मैं तो हर शो में कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कोहली का. I hope he hits a ton in every single match, and let's hope that he goes on to break Sachin's record this year in one days. It was 3 years ago, start of 2019. I said this will be the year that Virat Kohli goes past Sachin, because he had the whole year and a one-day World Cup. लेकिन भाई उस समय सिर्फ 3 सेंचुरी आए. तो बिल्कुल, I always wish that Kohli will get 100. I did it again. It didn't happen last time, but he looked good overall. भरत कोटवानी, अक्षर को ऊपर बैटिंग कराओ भाई, उसमें बहुत टैलेंट है. इंडियन टीम इज नॉट फ्लेक्सिबल. नहीं, मैं आपकी कमेंट का जो पहला हिस्सा है ना, उससे सहमत हूं. दूसरी से आई एम नॉट इंटायरली, मैं आपकी बात सहमत हूं, बिकॉज वी सीन इन T20s राहुल एंड रोहित हैव सेंट अक्षर अप टू 4 and 5 इन T20s. आई एम सेइंग ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द वनडे टीम. आपके पास बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे ऋषभ पंत, बट बेचारे उनके साथ जो हादसा हुआ, अभी वो अगले 1 साल 1.5 साल तक टीम में नहीं आएंगे. नाउ योर ओनली नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ऑप्शन एज अ बैट्समैन इज ईशान किशन. But Ishan Kishan I would not pick because his record in the middle order is not very good. मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, but I'm saying number 4 पे I would not play Sky at 4-3. I'd keep Sky down at 5.
I don't think KL Rahul will go to four. Hardik Pandya should go, but if you want something different, either send Jadeja or either send Akshar. Try the left-hander, and I agree with you, Bharat Kotwani. Okay, Akshar is batting is very, very, very handy these days. So yes, I've asked you some questions too. What do you all think? I want you people who are watching this stream to also comment below. Where do you think Surya Kumar Yadav should bat? Should he be persisted with at number four in this horrible form, or should he perhaps be, relieved of some pressure and maybe have him bat at six with the hopes that उनसे आगे जो बल्लेबाज जाए वो start दे. दूसरी बात, do you think Rohit Sharma is going to get runs today? He's having a bit of a lean time, when it comes to white ball cricket. I know he got some runs earlier against Sri Lanka or the New Zealand, but right now against Australia, you need to be scoring runs. So मेरी नजर दोस्तों इन सारे बल्लेबाज से ज्यादा is actually on Rohit Sharma. India in a World Cup year need their captain firing. और 6 महीने बचते हैं. Rohit has got to get some good handy one day runs. हाँ जी और कोई सवाल आर्यन यथार्थ वेलकम आर्यन यथार्थ दैट्स नॉट अ नेम दैट आई एम टू फेमिलियर विद यू मस्ट बी फेयरली न्यू हियर स्वागत है आपका नंबर 3 सूर्य कुमार यादव you're saying replace Virat Kohli and put a guy who doesn't know where the ball is coming at 3 नहीं भाई इसको नीचे कराओ there's too much pressure on him batting at number 4 I think the sight of Mitchell Stark will have Surya Kumar Yadav already shaken so I would bat him low but ठीक है आपकी राय है आर्यन यथार्थ Sky should bat at number 6 or 7 after 30. हाँ समथिंग like that. बिल्कुल भारत किलर नाइट अतुल प्रताप सिंह कह रहे हैं सर क्या रोहित की कप्तानसी का लेवल गिरा है योर ओपिनियन अच्छा सवाल है मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरा है बट जब से तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तान बने हैं आई थिंक ही इज रियलाइज के यार मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाना और इंडियन टीम को जो मैं मानता हूं सबसे मुश्किल काम है विश्व क्रिकेट में उसमें जमीन आसमान का फर्क है he's got a good success rate in one days but T20 there's a lot of room for improvement also test cricket he's not even captain one full year he was made captain a year ago but then he didn't play a test match for India until this year so the sample size of Rohit Sharma as captain is what basically four BGT tests of which you won 2 lost 1 and drew so I think jitna bhi Rohit Sharma apne aap से जूझते हैं with his fitness, with the toughness, with the tough demands and expectations that come with being the test and one day and T20 captain, plus his own form, which has been very, very up and down. He's been very miserable, in fact, in the T20I format. So I don't know कि कैप्टनसी गिरा है या हमारे पास इतना सैंपल साइज नहीं था ये जज करने के लिए कि रोहित कितने अच्छे कप्तान हैं हमने इन्हें कप्तान के रूप में देखा या कप्तान माना लार्जली बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस इन द आईपीएल बट एक T20 लीग डोमेस्टिक लीग में कैप्टनसी करना और भारत टीम का कैप्टनसी करना जैसे मैंने कहा था जमीन आसमान का फर्क है इज अ गुड कैप्टन इज अ थिंकिंग कैप्टन बट द क्रैक्स आर शोइंग ही इज नॉट दिस द ऑरा ऑफ रोहित शर्मा जो शायद 1.5 साल पहले था वो मेरे हिसाब से आजकल नहीं है बिकॉज द टीम इज नॉट बीन डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू बिग मैचेस एशिया कप में आपने तो ये साबित किया पिछले साल कि आप एशिया के नंबर टॉप 3 टीम हो आप वर्ल्ड कप में ऐसे हारे हो 10 विकेट से घर पे आपका रिकॉर्ड ठीक है लेकिन घर के बाहर आपका रिकॉर्ड क्या है ऑफ कोर्स ही इज नॉट कैप्टन मच एज वेल बट आई वुडंट से कि स्टैंडर्ड गिरा है बट डेफिनेटली उस टायर में 2-3 पंक्चर आ चुके हैं सॉरी दैट वाज नॉट भरत दैट वाज फ्रॉम अतुल प्रताप सिंह भरत कह रहे गिल का चलना बहुत जरूरी है बिकॉज ही इज इन फॉर्म बिल्कुल ही इज इन फॉर्म ही हैज टू स्कोर आई थिंक ही विल स्कोर सम रन्स टुडे अ गुड 60 विल बी गुड फ्रॉम हिम क्योंकि सर ये 6 महीने के अंदर इंडिया 2 बार 10 विकेट हारा है वो भी डिफरेंट फॉर्म में देखो अगर आप मुझसे T20 टीम के बारे में बात कर रहे हो तो इंडिया की T20 टीम काफी रद्दी है माफी चाहूंगा उस शब्द का उपयोग काफी रद्दी टीम है बिकॉज आप नंबर 1 बने हो वेस्ट इंडीज को घर पे हराकर न्यूजीलैंड को घर पे हराकर श्रीलंका को घर पे हराकर आप एक एशिया कप गए आपकी वहां हवा टाइट हो गई मतलब एशिया कप इज अ टूर्नामेंट इंडिया हैव नो बिजनेस लूजिंग इंडिया शुड हैव वन द एशिया कप बट दे डिडंट इवन मेक द फाइनल यानी कि आप नंबर 3 T20 टीम हो एशिया के अंदर शर्मिंदगी की बात है ये दूसरी बात साउथ अफ्रीका आई उनको हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ये सब ठीक है व्हाई डू इंडियन फैंस द मीडिया दे प्रेज दिस टीम जब वो घर पे
फटी हुई टीम के साथ ये बायलैटरल सीरीज जीतते? क्यों इंडिया टूर्नामेंट जाके खराब परफॉर्मेंस देती है? डुल डुल के मर मर के इंडिया 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंची विद दैट टीम, और सेमीफाइनल में ऐसा धोया, जैसे आपने अभी जिक्र किया किलर नाइट 10 विकेट का। क्या फायदा? मैं कहता हूं डू नॉट, आप लोग जो फैंस हो, आप मेरी तरह टीम की सफलता देखना चाहते हो, stop giving so much importance to these random 3 मैच bilateral T20 सीरीज। एशिया कप पे जोर डालो, विश्व कप पे जोर डालो, पर नहीं है। घर पे हम सब जीते। मैं हैरान था कि पिछले साल की शुरुआत में अचानक इंडिया नंबर 1 T20 टीम हो गई। मैंने कहा ये टीम, इस टीम में तो इतनी प्रॉब्लम्स है कि अंधे बहरे को भी पता है, बट स्टिल पीपल से टीम अच्छी, टीम अच्छी है। T20 टीम अच्छी नहीं है। T20 टीम में जो 30, 31, 32 के उम्र के ज्यादा लोग हैं, उन्हें हटाओ। T20 यंग प्लेयर्स का गेम है। Pick more youngsters, just like Dhoni took that team in 2007. Take a punt on younger players. Okay. Now, coming to the one day team, they're still better because they're putting up better results. But that said, these results have come at home. पिछले इंडिया के जो 2 वनडे सीरीज थे, 3 वनडे सीरीज थे पिछले 4 में से, साउथ अफ्रीका में पिछले साल की शुरुआत में 3-0 हारी इंडिया एक वनडे सीरीज। इंग्लैंड गई, वहां जीत के आई 2-1। बांग्लादेश में हारे ये लोग, न्यूजीलैंड में हारी लोग। तो काहे की अच्छी वनडे टीम है ये? स्टॉप जजिंग, स्टॉप लुकिंग एट आईसीसी रैंकिंग्स, डू नॉट लुक एट दैट, लुक एट रिजल्ट्स। कहां पे आ रहे हैं, मतलब किस देश में आ रहे हैं, और खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, रास्ता आपको साफ मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा ये मैंने रैंट कर दिया, बट आपका सवाल ही इतना अच्छा था। सर, हमें WTC वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए बिकॉज इंडिया व्हाइट बॉल टीम एवरेज। बिल्कुल, आपने आपने सही कहा, कीप द एक्सपेक्टेशंस लो। आप टीम को चढ़ाओगे, अक्सर दे विल डिसअपॉइंट यू। अश्विन आर्या, इंडिया ओडी टीम फिक्स है या आईपीएल परफॉर्मेंस देख के एक दो प्लेयर को डब्ल्यू टीम में लेना चाहिए? नहीं, टीम टीम इज फिक्स्ड इन द सेंस दैट के majority of the players, Ashwin Arya, they pick themselves, right? Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma, KL Rahul, Hardik Pandya, Shreyas Iyer should be there. So these players pick themselves. But just like I've said on the last few live streams, we've seen इतिहास गवाह है कि एक शानदार 2 महीने के आईपीएल के बाद कुछ प्लेयर्स आते हैं, कुछ प्लेयर्स जाते हैं। अंबती रायडू in 2019 was backed by Ravi Shastri, Virat Kohli, and Rohit Sharma and the chief selectors as India's number 4 for the 2019 One Day World Cup. He failed in just 3 matches against Australia, 3 ODIs just for the IPL. Struggle in the IPL, bang, he's gone. Vijay Shankar comes in. So I'm saying if any batsman scores 600 runs who's not in India's current one day squad or T20 squad, they could automatically push themselves into India's World Cup squad. And just like there was a question earlier on the stream, Suryakumar Yadav is very, very far from locking his place in India's World Cup squad. If a Sanju Samson scores 600 runs, if a Deepak Hooda scores 500 runs, there are enough candidates who could displace Ishan Kishan as well as Suryakumar Yadav from India's World Cup squad. So if you're talking about that, Ashwin, yes, one IPL could change, and certain players who are not fixed in the team, they could go out. Ashutosh Bajpayee, welcome back. KL at 4, Hardik at 5, and Sky at 6. I agree with you. I agree with you. Would it be fair to say that Rohit does not have a plan on the fly? It could be. It could be. Obviously, when you're a franchise, Ashutosh, and you're winning tournaments like that, the whole think tank, Zahir Khan, Shane Bond, John T. Rose, all these guys who've been part of that Mumbai Indian franchise, definitely there's a big role to play. Or यहाँ पे Rohit Sharma on the field. Of course, he has Rahul Dravid, but perhaps that's the reason why, because the think tank of Mumbai Indians has been hired or assembled with such big money for such a specific job. But again, I would not like to compare a domestic T20 league with the Indian team, which is why I said earlier, I think Rohit Sharma realized in his first year of the captaincy that bhai, leading Mumbai Indians with all that money, all that support system, all the dedication is very different when captaining people in the Indian cricket team. सर, वो दिन दूर नहीं जो हमें अफगानिस्तान या बांग्लादेश हरा दे वर्ल्ड कप में, because they're coming. बिल्कुल, the Asia Cup, Bangladesh came very close. There was a tied match against Afghanistan. Especially Afghanistan, they have shown for the last couple of years कि उन्हें हल्के में लेना बहुत 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 बड़ी गलती होती है। Any more questions, दोस्तों? 5 मिनट बचते हैं। Then I've got to also get ready for my next show. आप मेरे साथ 12:40 पर आप, मैं और मेरी वाइफ Meha, who's a sports anchor, she's a sports editor at News 9 Live. You can join us at 12:45 over there, and the two of us will be discussing आज का match as well.
But really, really like the way you guys answer your questions. आप इतने knowledgeable fans हो, आप इतने passionate fans हो. जज्बाती तो हम सभी हो जाते हैं जब भारतीय क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आप लोग बहुत बहुत सही सही sensible questions पूछते हो. And like I said, it's always nice to debate, to discuss, to even disagree. If you all don't agree with something I've said, I've seen that you comment. If you ask a question or comment that I don't necessarily agree with, I feel like I have the liberty to also discuss with you. तो एक ये जो एक डिस्कशन है आप लोग और मेरे बीच मुझे बहुत पसंद है. सर इस बार सबसे ज्यादा चांस किसका है इंडिया के लिए? इंडिया का चांस अच्छा है क्योंकि ये घर पे होगा दोस्त मेरे, अतुल प्रताप. पर अगेन 6 महीने में दुनिया ऊपर नीचे हो सकती है भाई. आपकी प्रेडिक्शन क्या है? Who will win? I think India is going to win a very very tough match. I don't think Surya is going to score much because if they bat him at number 4, he just doesn't look like he's got it right now. It's again मैं यहाँ पे काबिलियत के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं current mind frame, two golden ducks, you walk out there with that swag, that chewing gum. आप ठीक से guard नहीं ले पा रहे हो. He's at a very low point, and I hope कि Rahul Dravid, Rohit Sharma, team management, Vikram Rathod, I hope they're putting an arm around Sky shoulder and making him feel wanted. And I hope he plays. But leading run score today, I'm gonna put Virat Kohli, I'm going to put Shubman Gill, and I'm going to put Mitchell Marsh once again. Ashutosh Bhatia, why would top order batters in domestic season are picked from middle order slots? Well, it's a good question, but it's a question which I have seen this predicament जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ठीक से, यानी कि 94 95 से. I mean, there's so many players. क्या होता है कि आपको जगह नहीं मिल रही है अपनी फिक्स स्लॉट पे, so you're willing to do anything. Virender Sehwag was picked as an opener, but he wanted to bat in the middle order. VVS Lakshman wanted to bat in the middle order. He was asked to open. So players do have to come out of their comfort zones because एक तो टैलेंट थोड़ा गिर चुका है डोमेस्टिक में, and the selectors often put more weightage to IPL performances, and they do pick players for not specific roles just because there's already too many spots that are being occupied. I think there's a question yesterday about should Yashasvi Jaiswal bat at number 3 in Test. मुश्किल है ना, because he only bats as an opener when he plays for Mumbai. So Sarfaraz bats in the middle order. So, but what if there's a vacancy in the opening? We've seen Mayank Agarwal bat in the middle order. We've seen KL Rahul bat in the middle order. We've seen Shubman Gill open. हालांकि Shubman Gill भी middle order batsman है. So it's tough, and I think the selectors sometimes are forced to pick players who are not batting in a certain role just because of the sheer volume of runs they've taken. Namaste, sir. Karan Naidu, strategy to remove Australia's top and middle order. Bowl slightly more on the stumps. You're allowing Mitchell Marsh too much room to drive off the back foot. And bowl, get Washington Sundar. Bowl Washington Sundar. Pick Washington Sundar and bowl him inside the power play. Lick kilo mere se, he will get Travis head out. He'll get him either LBW or he'll get him caught off some loose shot in the gully and point region. That's one thing. Sky look primed to fail another yo-yo test. No, Sky is very fit. I wouldn't talk about his fitness as such. He's still very fit. But right now, it's the battles that he's facing between the ears, which unfortunately threaten to unravel such a fantastic batsman. सर पहले बैटिंग करते हुए कितना रन लगा सकते हैं आज? 280, क्योंकि चेन्नई का जो ग्राउंड है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, अतुल प्रताप सिंह, इतना हाई स्कोरिंग नहीं है और थोड़ी बारिश भी हुई है पिछले 2-3 दिनों में, तो ये वैसे ही 300 वाला ग्राउंड तो एवरेज शायद उतना भी नहीं है. सो आई वुड से 270 तक एक अच्छा टोटल होगा. टाइट मैच रहेगा आज. Sanjeet Shekhar, welcome Sanjeet Shekhar. Sky options is running out. Absolutely, Sky. It's not just about Sky options running out. Or the team management members or the selectors looking for his replacement. Khudana Khasta, his form fades away totally, and he's not in your World Cup plans. Who then is your backup number 4? Because remember, Suryakumar Yadav is a backup number 4. India's first choice number 4 is their most successful batsman in 2022. That is Shreyas Iyer. Suryakumar Yadav is only playing this series in the 11 because Shreyas Iyer is not there. अगर अय्यर होते तो सूर्य कुमार यादव बिग पहन के ड्रिंक्स लेते इस सीरीज में. So he's a capable candidate. He's still not cracked the one-day game. उनमें इतनी क्षमता है, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो नंबर 4 क्रैक कर पाएंगे एक दिन. बट अगर वो नहीं कर पाए एक वर्ल्ड कप साल में, और 32 के होंगे शायद वो, इनका बैकअप कौन है? यानी कि अगर सूर्य कुमार इंडिया के वनडे स्क्वाड में या वर्ल्ड कप स्क्वाड में श्रेयस अय्यर के बैकअप हैं, तो उनका बैकअप कौन होगा? दिस इज द क्वेश्चन द टीम हैज टू आंसर. सर हमारी बॉलिंग कभी कभी बहुत ज्यादा पिट रही है. नो वन इज एबल टू कंट्रोल इन एब्सेंस. नहीं, वनडे में फिर भी अच्छे प्रदर्शन दे पा रही है टीम. आई नो दे लॉस्ट इन बांग्लादेश, बट ओवरऑल
the bowling is not as problematic for me right now as the batting is, भरत कोटवानी. bowling फिर भी ठीक है, लेकिन जब बैट्समैन 117 रन बना रहे हैं ना, और जब और देखो, पहले मैच में टीम ने कितना 28 रन पे 8 विकेट लिए, ऑस्ट्रेलिया को 100 कितना 190 के आसपास उन्हें ऑल आउट किया था. तो बॉलर ने अपना काम किया. एक मैच में बॉलर्स खराब नहीं होते, लेकिन लगातार जो बैटिंग 2 मैच में पावर प्ले के अंदर विकेट्स फेंक रही है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. आई एम नॉट टू वर्ड अबाउट द बॉलिंग राइट नाउ. Ishan Kishan at four. That means you're saying it's a drop sky. That's a bold move, Ashutosh Bajpai. If you think that Ishan Kishan should bat at four, that means there's no place for Surya today. Could happen, but I still think Surya should be given one more chance. Then take a call on what happens. On the basis of 2 matches, don't entirely write him off. चलिए दोस्तों, last few minutes, then I'm going to get back to getting myself ready for the next show, which is starting, like I said, at 12:45 on News 9 Live. Please like button ठोकते जाइए अगर आपने अब तक नहीं किया है. जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे, उतनी इस चैनल और खासकर इस वीडियो की रीच है. सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड डेडिकेशन. सर, आपसे बात करके अच्छा लगता है और अ ट्रिब्यूट टू योर फादर्स कंट्रीब्यूशन इन हिंदी सिनेमा. थैंक यू अतुल प्रताप सिंह. स्नेह आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट पढ़ के. पिताजी की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे मेरे ऑफिस में. All the best for the podcast and the videos. Karan Naidu, thank you. Very, very kind of you. Very good questions you asked. Do come back and be a regular viewer, Karan Naidu. And all of you who are here, thank you so much. It makes it worth my time and effort to come and do these videos when I get to interact with such lovely people. If you like my videos, do press the like button. Please comment even after the stream and share this video in case आपके सर्कल में ऐसे कोई और क्रिकेट प्रेमी हैं. मैं मानता हूँ जरूर होंगे आपके दोस्त सर्कल में, आपके फैमिली में. Let them know कि there's a guy called Jamie Alter who sits and talks about cricket now and then. So thank you. ट्विटर स्पेसेस करिए. मैंने एक बार किया था दोस्त, बट फ्रैंकली जिस चीज में मन ना लगे ना, या जिस चीज में दिल ना लगे, वो नहीं करना चाहिए. मैं कर सकता हूँ, बट जब खुद मुझे इतना मजा नहीं आएगा, तो आई मच रादर डूइंग दीस थिंग्स जहां पे मैं आप लोग को देख सकता हूँ. ना मैं ट्विटर स्पेसेस वाला हूँ, ना मैं पॉडकास्ट वाला हूँ, मतलब ऑडियो पॉडकास्ट. I like the video. I like to see myself and see visuals. I'm much more of that. But thank you for your suggestion, Bharat Kotwani. Team need Gabbar badly. पता नहीं दोस्त, शिखर धवन से टीम आगे निकल चुकी है. शिखर धवन का बहुत बहुत बड़ा अहम योगदान रहा वनडे क्रिकेट में, लेकिन ही इज नॉट गेटिंग यंगर. इज गोना बी 36 ऑन द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स. और पिछले साल जो शिखर धवन का स्ट्राइक रेट था वनडे में 72, यार मैंने उस दिन भी कहा था ये 90s नहीं है यार, ये 2023 है. आपको वर्ल्ड कप जीतना है. 70 की स्ट्राइक रेट से 75 की स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन की मेरे हिसाब से, नो डिसरिस्पेक्ट टू गब्बर, वो जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपका वर्ल्ड कप का टॉप 3 में रोहित शर्मा 35, शिखर धवन 36 और विराट कोहली 34 हो, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक. आई थिंक शुभमन गिल इज अ फैंटास्टिक यंग फिट इन दैट. स्ट्रगल करेंगे यहाँ वहां, लेकिन जो उन्होंने 2022 में हासिल किया और 2023 में, आई स्टिल थिंक शुभमन गिल इज गोना स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स दिस ईयर. Malinga left test because it was taking a toll, and then we're facing the same problem with Bumrah. Bumrah will have to. Bumrah has no choice now, Ashutosh. Bumrah is coming back from, itna bada injury, those surgeries. Bumrah is going to have to give up one format, and it looks like he'll probably give up the test format because his body cannot take the toll of bowling, 20 overs, 15 overs in a day anymore. So, very, very sad. चलिए लास्ट क्वेश्चन. सर, अब सचिन भी बोल रहे हैं कि ओडीआई बोरिंग हो गया, तो क्या ओडीआई ओवर्स रिड्यूस करना चाहिए? दोस्त अतुल प्रताप सिंह, मेरे हिसाब से जवाब ये नहीं है कि 40 कराओ, 2 बॉल कराओ, 4 बॉल कराओ. आईसीसी को रेगुलरिटी ऑफ वनडे क्रिकेट देखनी चाहिए, और इन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज बायलैटरल सीरीज देखनी चाहिए. बायलैटरल सीरीज में कोई मजा नहीं है, बहुत बहुत बोरिंग होती है. आप ट्राई सीरीज करवाइए, आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज कराइए, आप चैंपियंस ट्रॉफी और कराइए, आप टूर्नामेंट्स कराइए जहां पे जीतने का एक एक मकसद हो, एक 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 चाह हो. बायलैटरल में क्या है यार, 3 जीत गए, क्या हुआ? टीम्स आर नॉट टेकिंग बायलैटरल्स एज सीरियसली. 40 ओवर आप ट्राई करके देख लिए, आप 2 नो बॉल करके देख लिए, आप रूल चेंज करिए, सब ठीक है. क्रिकेट से there is no sport that has been changed more than cricket in the history of all sports. But बड़ा मुद्दा ये है, बड़ा पिक्चर ये है कि भाई रेलेवेंस क्या है वनडे क्रिकेट का, और खासकर बायलैटरल्स का. दोस्तों चलिए, it's now 12:04. I have to get ready. I have half an hour left to get ready for my show. Thank you all. Have a great day. Let's hope India win. Take care. Jai Hind.